भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो। वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। Om Shanti. Everyone is kindly requested to settle down. Our respected speaker is with us, and she has come all the way from Mumbai to share her godly wisdom with you all. So those who are outside, kindly come and settle down in the hall. So we have a special speaker, motivational speaker from Mumbai with us, Brahma Kumaris Sister Neerja. She is a dedicated, surrendered teacher in center in Mumbai, and she is a motivational speaker as well. Senior Raj Yoga teacher at Malad, Mumbai. Conducted several lecture sessions on different topics across the country in various corporates like TCS, Sony, eServer, L&T, Reliance Energy, JP Morgan, Bank of America, Resort Hotel and Retreat Hotel, Indian Naval Services, etc. And she also conducts various value education programs in different schools and colleges and organizations. She covers variety of topics: stress management, know thyself, setting goals, joy at workplace, etc. So now she will share her godly wisdom and experience on the topic, flowing with positive energy for peak productivity. So I request Tanuja Didi and Varsha Didi to welcome her with a flower bouquet and badge. Most respected Raj Yogini, Neerja Didi. Thank you. Om Shanti and good morning. So all very well charged, all charged, yes. So I think to break the monotony of listening, so we should do something different. So let us have a musical clap. So all ready for that? So you have to follow me. So what you need to do is 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, thank you very much. So again, I would like to
start with a small warm-up exercise. Afterwards. Thank you. So, I will narrate a small incident. You have to listen to it carefully. And then I will ask you some questions. You have to answer them. Okay? So, the incident is Anthony and Cleopatra, they were found dead in a room. A glass of water had fallen down. The window was open, but the door was closed. So my question is, what was the reason for their death? So again, I would like to repeat the incident. Anthony और क्लियोपात्रा मरे हुए पड़े थे. ग्लास पानी का गिरा हुआ था, खिड़की खुली थी, दरवाज़ा बंद था. तो मेरा प्रश्न है कि वो कैसे मर गए? कैसे मरे होंगे? जी? पानी में जहर था, दोनों ने पी लिया और मर गए. जी? हाँ जी? नेचुरल डेथ हो गया. नेचुरल डेथ हो गया दोनों का एक साथ. ओके, कोइंसिडेंस में. अच्छी बात है. और जी? Air might be polluted, highly polluted, so that air, polluted air killed them. Okay. Somebody jumped out of the window. You mean to say from inside to out or from outside to in? From inside to out. Then both of them died. They were dead inside. Yes? They might have fought with each other and killed each other. Right. अच्छा. Yes, somebody from behind. आपको क्या लगता है कैसे मर गए वो? जी, आपने सब बताया. अब और Pardon? The door was closed, so you know the answer. So actually, Anthony and Cleopatra, they were two fishes. ये दो मछलियाँ थी, वो पानी के ग्लास में थे और जो घर का मालिक था तो उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया. उनको कहीं जाना था. So all of a sudden he had to leave. He closed the door, but he forgot to close the window. And a gust of wind entered the window, which made the glass of water fall down. And due to lack of water, the fishes died. Okay. So what happened? What happened was, when you heard the names Anthony and Cleopatra, you assumed them to be human beings. So we could not think that they could be fishes, right? And that's why we never got the right answer. So don't you think even in our lives, so many times we may be taking wrong decisions because of wrong assumptions. We assume many things based on our past sanskars, or maybe based on our past information, based on past experiences. So we sometimes can take wrong decisions, which can lead to wrong results, right? Okay, this has nothing to do with today's topic. This was just a warm-up exercise. So all ready for today's topic? So today's topic is flowing with positive energy for peak productivity. So this is what all IT people really require. I think most of you must be facing deadlines and you have lot to cover, time less, right? So you need lot of energy, lot of positive energy. So from where can we get that positive energy? So we see that today what has happened is, okay, first of all we will see. Now in this scale, just measure what's your energy right now. आपकी ऊर्जा अभी इस वक्त कितनी है? तो इस स्केल पे आप माप कर सकते हैं. Where do you stand in this scale? Which is the range? 0 to 2.5, 2.5 to 5, 5 to 7.5, or 7.5 to 10?
अभी शिवानी बहन का सुन के ज़्यादा हो गया होगा, है ना जी? How to measure means it's written, you're feeling energized, you're feeling that now, right now, suppose you're given a lot of work, you're capable to do. Or you feel you need a little rest, and then you will be able to do. तो आपको कैसा लग रहा है अभी अपनी एनर्जी की स्टेट आपको कैसा लग रहा है? तो आप रेंज में आप अपने आप को चेक करो. सो यू नीड नॉट गिव द आंसर. इफ एनीबडी विशेस यू कैन शेयर आपको कैसा लग रहा है. अच्छा, नाउ सपोज यू हैव पेपर एंड पेन एंड पेपर है, तो आप एक दिन का रूटीन ले लीजिए, मे बी अ वर्क डे रूटीन और मे बी अ बिजनेस डे रूटीन, एंड जस्ट चेक, प्लॉट योर प्रोडक्टिविटी ग्राफ और योर स्ट्रेस ग्राफ along the time graph. एक दिन के 24 घंटे नीचे एक्स एक्सिस पर ले लो और वाई एक्सिस पर जो स्ट्रेस है या आपकी प्रोडक्टिविटी है वो सारे दिन में how is it ranging or how is it differing? Because I don't think we all have stable energy throughout the day. Throughout the day our energy levels differ. At the same time stresses also differ. ऐसा कोई भी दिन होता है जो कोई भी स्ट्रेस नहीं है? ऐसा होता है? ऐसा होता है? Today I am having no stress at all. Here I think you must be experiencing that, right? You must be, no? You are. Okay, at least you have a little bit of stress to reach on time, to take the front seat, isn't it? Suppose front seats are all occupied, especially Shivani's sister, her session, and you don't get a seat, isn't it? So thoda stress hota hai. So any part, any day, you just see there are different stresses that we all have to face. And especially on a work day or on a business deal day, you may be having stresses. And stresses vary from person to person, right? Now, for example, a working woman, she may be having more stress in the morning hours because she has to cook her tiffin as well as other family members' tiffin, do the household chores, finish it off, then rush to the office, reach on time. So that's a stressor. Again, then we have some person has to reach on time for the train, take the train, or maybe somebody has stress for a business deal, meeting a client. It can vary from person to person, and it varies from hour to hour also, in a day also, okay? So, अगर आप ये stress graph और अपनी productivity graph बनाएंगे, तो कैसा लगेगा? कुछ इस तरीके से होगा. Anybody would like to share? कोई share करना चाहेंगे? कि आपका समझो स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस और प्रोडक्टिविटी का कुछ कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है जी? मोर स्ट्रेस होता है तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाता है. अच्छा, ओके. और किसी और का कुछ और ओपिनियन है? कुछ और कहना है? हाँ जी. As long as the stress is under control, so you're more productive. Right, very nice. Okay, any other? Pardon? Okay. Right. Right. You're very right. So in this graph also, if you observe the different activities of the day, so sometimes stress actually boosts our productivity. So if the stress is too high, it may lower or dampen your productivity. It may hamper your productivity. But otherwise, if stress taken in a positive way, if it is perceived in a positive way,
it can turn into a blessing in disguise. It can turn into, you can turn it into an opportunity to, meet that challenge, right? So we can, sometimes, if you just see your life, most learnings come from stressors. When you have gone through a stressful situation, कुछ बुरा हुआ आपके साथ, कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, तब आपने बहुत अच्छी तरह से एक learning, एक lesson मिल गया आपको. So most learnings generally come from stresses. So that stress is actually good for us because it boosted us, it made us more productive. So now in this session we will see these three things, okay? We will understand the dynamics of energy management. Okay, how many of you think time management is very important? Almost all, right. How many of you think energy management is more important than time management? Okay, I'll ask it other way now. How many of you think that time management is more important than energy management? Okay, and the rest who didn't raise anywhere? You're not very clear, right? Okay. So sometimes you must have thought that today I will reach home fast and then I will spend some quality time with my family, with my kids, with my siblings, maybe with my partner. So I'll spend some quality time. So we think like that and we rush through the day, trying to finish off all our work and then meet all the deadlines. And finally, we manage to reach early on time or before time at our home. But then there is no drive left. There is no energy. So then we don't want any disturbance. We would rather switch on the TV or watch something or just go off to bed. ऐसा होता है ना कि हमने टाइम निकाला भी, टाइम है भी, पर वो एनर्जी नहीं है, वो ड्राइव नहीं, वो इच्छा नहीं है. ऐसे पहले थी, सुबह सुबह थी, पर अब पता नहीं कहाँ गुम हो गया. तब लगता है सिर्फ सो जाए या कुछ रिलैक्स हो जाए, राइट? तो आपको क्या लगता है, टाइम मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है कि एनर्जी मैनेजमेंट? बोथ आर इम्पोर्टेंट टुगेदर. विच इज फर्स्ट? Energy management. Because if you had the energy, then that time you could utilize it in a better way. So many times you must have observed yourself, you have the time, but you don't have the mood, or you don't have that energy, that, the drive to do something. कई बार होता है ना, you have traveling time, so you can plan out things, you can sort out things, but then you don't have the interest or you don't have that energy to do it. So if you have the energy, then maybe you can manage many, many things. So right now, of course, time is very precious. Time is money, of course. But here, now, we think about that energy is the currency right now. Because we want to do many things in less time, right? We would like to scam everything into that 24 hours. बहुत कुछ, जैसे अभी आप यहाँ पर आए, already you're loaded with lots of work, right? Projects, maybe, so many things you have to cover. And now you have to do meditation also. And now you have to listen to spiritual knowledge also. आपको इसके लिए भी time निकालना है, क्योंकि आपने समझ लिया कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी को टाइम देंगे तो आपका और भी काम अच्छा हो सकता है. तो आपको इसके लिए भी टाइम बनाना है, आपकी फैमिली के लिए तो टाइम निकालना ही निकालना है. एंड इफ़ यू आर वेरी इफ़ यू आर वेरी social, then you would like to have more extracurricular activities also. So इतना सब कुछ 24 hours में डालने के लिए आपको वैसी एनर्जी चाहिए. और अभी आप ज़रा ऑब्जर्व करना 1 मिनट के लिए, सारे दिन में आपकी एनर्जी पीक्स कब होता है?
सारे दिन में when you have the maximum energy to do things, अब देखना, morning hours, अच्छा, some people have night hours also, they like to work in the night, so all different, but still you will see that the energy doesn't stay same throughout, is it? Does it stay same throughout the day? नहीं, वो अलग अलग होता है ना, और कभी कभी एनर्जी ड्रॉप भी हो जाता. So now how should I increase my energy? So that we'll see now in this session. So 3 things we'll understand. First is what are the dynamics of energy management? इसकी गतिशीलता, गतिविधि क्या है एनर्जी की? और दूसरा हम देखेंगे कि जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आते हैं तब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है ना, तो उस समय हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे काम करें. एंड थर्ड, अंडरस्टैंड द इक्वेशन बिटवीन एनर्जी एंड परफॉर्मेंस. ओके, एक बार की बात है, there was a person sitting very tired and depressed near a harbor, जहाँ ships sail होते हैं ना, ships आते हैं, तो वहाँ वो बहुत ही ऐसे थका हुआ निराश बैठे थे. So somebody, some passerby just happens to ask him, brother, why are you so tired? What's the reason? So he says, my job is only like that. So then the person feels very sympathetic towards him, and out of sympathy asks him, what is your job? So he just points out to one ship, and the people loading cargo, huge cargo onto the ship, and unloading huge cargo from the ship to the harbor. So he says, that's my job. So then the other person, out of sympathy, he just happens to ask him, since how many years are you doing this job? So he replies, I'll be beginning from tomorrow. I'll start from tomorrow. So what happened? That he has not yet done the work, not yet started the work in fact, but he's already tired beforehand itself. So many times it so happens with us that we have not yet started our work, but just thinking and just imagining about the work, it makes us stressed and tired, right? जिस दिन हमें पता है आज बहुत काम करना है, उस दिन सुबह से ही थकावट लगती है कि आज बहुत करना है, आज बहुत काम करना है, बहुत कुछ फिनिश करना है ना? So there is a stress, and along with it, it's accompanied by tiredness, some sense of frustration that is there. So already low energy. So now, how do we start off with high energy? And how do we maintain that energy? So let us understand some dynamics about energy. So we just saw in the graph, you all have plotted your graph. आपका ग्राफ आपने बनाया कि आपका सारे दिन में पीक एनर्जी पॉइंट्स, पीक प्रोडक्टिविटी पॉइंट्स कौन से टाइम पे होते हैं. सो यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग और एन एस्टिमेट अबाउट योर सेल्फ, राइट? एंड यू IT people are more passionate people, I suppose, right? And you would want to cram in many things, do more in less time. So now, if you want to do that, I have to change my perception towards stress. I have to change my idea towards stress. Once what happened, the same day, same time, in America, 2 businessmen, they suffered from a massive heart attack, same time. And one of them was immediately admitted to the hospital. One of them was admitted to the hospital, other one recovered quickly. And what had happened, the reason also was the same. The reason was both their wives had ran off with somebody else. So that was the reason. So one of them was admitted in the hospital, other one, his heart attack was out of sheer joy. So he immediately took the car, he took the vehicle, and then he started driving very fast. And it was a Sunday. So the traffic police started blowing his whistle, telling him to stop, 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 because he was running beyond the speed limit. Finally, the traffic police, he managed to catch hold of him.
And he asked him, why are you driving so fast? So he said that today only my wife has ran off with some traffic police. So didn't want her to come back. So that's why I was driving fast. So one of them was admitted in the hospital, other one was really joyful. So see, the stress was the same. The stress was the same, isn't it? Incident was the same, situation was same, but reaction was different. Response was different, right? So that means the incident itself is not stressful. The incident or any situation in itself is not stressful. Stress lies in how I take it, how I see it, how I perceive the situation, right? How I see the situation is just like, suppose you have a glass which is half filled with water and half filled with air. So somebody can say it is half filled with water, whereas somebody else can say it is half empty. Both are right? Both are right? But don't you think the reactions of both the people would be different? And their lives also would be a little different? How? Can you explain? How? The one who says the thing that glass is half full. So, yes? It's a pessimistic person. Okay. So that means your perception, your attitude, the attitude of both the people are totally different. One can see what is there, and one can see what is not there. So naturally, the results also would be different. Now, for example, you go to a party, and there, in the party, you have a buffet system. So you go with your dish, and you take everything, and you sit along with your friends. In your friend circle, you come, and you enjoy your snacks. And meanwhile, you notice that your plate, samosa is missing. The samosa is not there, and all the other friends, they have a big, nice, delicious-looking samosa. So now what will happen? You will continue eating, or you'll do something. You will continue eating your food, or you will strive to get that samosa. If it's your delicious item or it's your favorite, then naturally you'll ask the others, where did you get this samosa? So maybe they will point out from this counter. So you will definitely go there and you will ask for a samosa. But unfortunately, samosas are over. So you don't get it. So now, what happens next? What happens? You know, you have everything else. There may be a nice sweet. There may be other delicious items present in your dish. But then you will have the sorrow of not getting the samosa. Isn't it? A little bit of disappointment would be there that you missed out on the samosa, right? Isn't it? So our tendency is to see what is not there, what we are missing on, what we are gaining. So the eye for that is less, right? So, you know, when I have an eye for things which I've got, attitude of gratitude, then naturally what will happen? Stress is less. Stress is more when I have an eye for what I've missed out. When I always find what I've missed rather than what I'm gaining. So then the stress is there. So now if I want to increase my productivity and my energy, I have to change my perceptions. मेरी जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, उसको मुझे बदलना होगा. है ना? तो it is in our hands. Our hands. Why? Because जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. आपकी दृष्टि कैसी है वैसी सृष्टि आपको नजर आएगी. So now, for example, you know, there was a person who was driving a vehicle, and he reached a gas station.
near the gas station, there was an old man sitting along with a small granddaughter. So this person got out from the car and tells this old man, I'm new to this place, so can you just help me? You can just tell me how this place is. ये जगह कैसा है? यहाँ के लोग कैसे हैं? So that person replies, that old man replies, from where have you come? Please tell me about that. So this person says, you know, that place where I stayed, it was really a horrible place. Nobody used to help, you know, they all used to bitch each other. तो एक दूसरे के पीछे कुछ ना कुछ बोलना और मदद नहीं करना, ऐसे टाइप के लोग थे. So then this old man says, I'm very sorry to say that this place is also like this only. So he, you know, says, oh, very sad, and he returns back and he moves away. थोड़ी देर के बाद एक दूसरी गाड़ी आती है, and again यहाँ पर भी एक family है गाड़ी में और एक व्यक्ति, he just steps out and he asks this old man, how is this place? Because I'm just new to this place, I want to know about this place. So the old man replies, I want to know from where you have come from. So he says that I have come from like a place like heaven. You know, people used to really help each other. They were like a family. So I am really feeling so bad to leave that family and come here. But I wanted to know, how is this place? So this old man says, this place is also very much like heaven, the same. The place where you left is just like that. So now the granddaughter, she gets confused because same question and two different answers her grandpa has given. So she asks her grandpa, why did you reply different? Got it? Why did the old man reply differently? क्या रीज़न होगा? हाँ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि. अगर आपको ये दुनिया बहुत ख़राब दिख रही है तो आपको ऐसी दुनिया मिलेगी, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आप ट्रस्ट नहीं कर सको. अगर आपको ये दुनिया अच्छी लग रही है, आपको ऐसे ही दुनिया मिलेगी, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आप ट्रस्ट कर सको. तो आपकी जैसी दृष्टि वैसी आपकी सृष्टि. तो अगर मुझे सृष्टि सुंदर चाहिए, मुझे किसको करेक्ट करना पड़ेगा? अपनी दृष्टि को. So if I want to change my stressors, I want to improve my energy level and I want to improve my productivity, then I need to change my perception. I need to change my attitude, how I see things, how I perceive things. Okay, so stress is not the enemy. Paradoxically, it is the key to growth. Pardon? I didn't get you. Yeah, see, why it actually reduces our productivity is because I'm taking stress as an enemy. When I'm seeing stress as an enemy, then it... Pardon? Chances of error are more during stress, you mean to say. So that's what, when I take stress as an enemy, when I see stress as an enemy, suppose now I'm forced and, you know, I'm forced to do something, but मेरा दिल नहीं है. मेरा दिल नहीं है पर मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो उसमें एरर्स का चांस ज़्यादा है, उसमें प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगा. लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो फिर वो एरर्स भी नहीं होंगे और मेरा जो आउटपुट है, मेरा परफॉर्मेंस है, वो भी अच्छा हो जाएगा. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, हाउ आई सी. तो मुझे अगर मज़ा आ रहा है, मैं उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ले रही हूँ, मैं उसको अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ देख रही हूँ, तो फिर मुझे मज़ा आने की वजह से मेरा जो फोकस है वो क्लियर होगा, वो शार्प होगा. We'll see it more. So now we see for survival, it is survival of the fittest, right? ऐसे ही कहेंगे ना? अच्छा, आप में से कौन है जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, वो लो परफॉर्मेंस वाले हो तो चलेगा? चलेगा? समझो आपकी मेड सर्वेंट है,
आप पैसा देते हो, काम ही नहीं करती है, आपको ही फिर करना पड़ता है, तो चलेगा? आपके नीचे वाले लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं, तो आपको वो 10 बार पढ़ना पड़ रहा है, तो चलेगा? So we like high performers, no? Even companies, organizations, everywhere you see, we want high performers, right? Even gadgets also. See, gadgets also, before buying, we will check 10 times all the different gadgets, right? Different brands of gadget. And we will check the storage, we will check the capacity, we will check the price, and then we will evaluate and we will select the optimum, right? जो हमारे लिए वो बेस्ट है. तो हर जगह हमें हाई परफॉर्मेंस चाहिए, राइट? तो अगर हमें चाहिए हाई परफॉर्मेंस, तो हम खुद भी हाई परफॉर्मर्स होने चाहिए. तो कैसे हो? सो इट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जितनी आपकी कैपेसिटी है तो आप आगे चल सकते हैं. अपनी कैपेसिटी माना, आपकी कैपेसिटी का मतलब, अगर आपको मेड अच्छी चाहिए तो माना क्या चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, राइट? हाँ जी, जी, वर्क एफिशिएंसी, माना वो काम भी अच्छा करें, बिफोर टाइम भी करें, जल्दी जल्दी भी करें, तो ये सब कुछ चाहिए, राइट? हमें ये सब कुछ चाहिए तो हम कहेंगे बहुत अच्छे है, परफॉर्मेंस अच्छा है. तो मैं भी हाईली परफॉर्म करूं, इसके लिए मेरा स्पीड भी फास्ट चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क भी अच्छा चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, बिफोर टाइम भी चाहिए, है ना? ये सब फैक्टर्स चाहिए. तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो जैसे हमने अभी बताया कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा एनर्जी मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है. एनर्जी इज़ इन्फेक्शियस. तो एनर्जी इज़ द फंडामेंटल करेंसी ऑफ हाई परफॉर्मेंस. तो आप देखना कि अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपकी एनर्जी हाई है, पर आपके नीचे काम करने वाले, उनकी एनर्जी लो है, बहुत मिस्टेक्स करते हैं, काम टाइम पे नहीं देते हैं, तो वो आपको अफेक्ट करेगा. आपको करेगा अफेक्ट. आपकी एनर्जी बहुत हाई है, आपका एंथुजियाज्म बहुत है, बट आपके साथ वाले नहीं है ऐसे, तो अफेक्ट करेगा आपको, करेगा ना आपको अफेक्ट. So that means energy management means not only managing my energy, but also channelizing those people's energy where I relate to. जिन जिन के साथ मैं कार्य करती हूँ तो उनकी भी एनर्जी चैनलाइज होना चाहिए, वो भी हाई परफॉर्मेंस चाहिए, तब टीम का आउटपुट बेस्ट होगा, है ना? तो लीडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चैनलाइजिंग द एनर्जीज ऑफ दोज हु आर विद देम. तो हमें उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहना है, और वो स्किल है जो हमें डेवलप करना है. तो स्किल क्या है कि हमें इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे सबकी एनर्जी को चैनलाइज करके सबको प्रोडक्टिव बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? तो हमें ये चीज़ को समझना है, ये ट्रायंगल को समझना है. देखिए, एक तरफ है एनर्जी का ट्रायंगल, एक तरफ है एनर्जी द ट्रायंगल, कॉग्निटिव ट्रायंगल जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और दूसरा एनर्जी पिरामिड है जो प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है. ओके, सो द लेफ्ट साइड इज द एनर्जी, द कॉग्निटिव ट्रायंगल विच प्रोड्यूसेस एनर्जी. अब देखना ह्यूमन एनर्जी क्या है. ह्यूमन एनर्जी, इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ थॉट्स, feelings and behavior, right? Thoughts, feelings, behavior. आपको जैसा विचार करते वैसा फीलिंग आएगा ना. मैं अच्छी नहीं हूँ, तो फीलिंग कैसी होगी? लो. फीलिंग लो है तो कॉन्फिडेंटली काम कर सकेंगे? नहीं. सो इफ एनी वन ऑफ द थ्री इज नेगेटिव, द कॉन्सिक्वेंट एनर्जी इज नेगेटिव. सो एनी वन ऑफ द थ्री इज पॉजिटिव. सपोज मेरा थॉट है, आई एम गॉड्स चाइल्ड, आई एम क्रिएशन ऑफ गॉड, मेरी एनर्जी, गॉड हैज़ गिवन गिफ्टेड मी विद मैनी थिंग्स, तो वो मेरा थॉट है, तो फीलिंग पॉजिटिव, फीलिंग अच्छा है. सो ओनली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं काम आएगा, आपको पूरा ये ट्रायंगल को पॉजिटिव करना है. थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर.
दिस विल लीड टू पॉजिटिव एनर्जी, राइट? एंड पॉजिटिव एनर्जी से आपकी प्रोडक्टिविटी ऊंची हो जाएगी। तो देखिए प्रोडक्टिविटी का जो पिरामिड है, एनर्जी पिरामिड, तो इसमें देखना कि नीचे फिजिकल, फिर मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, दीज आर द 4 लेयर्स ऑफ द पिरामिड। तो सबसे पहले फिजिकल, अगर आपकी ताकत ही नहीं है शारीरिक, तो आप काम कर सकते हैं? तो फिजिकल फिटनेस ये फाउंडेशन है एनर्जी का, राइट? पहले पेटोबा फिर विटोबा, है ना? पेट को सब मिले, माना आप ठीक लग रहा है, फिट लग रहा है, फिर आप भगवान को भी याद कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज फिजिकल एनर्जी। अच्छा, फिजिकल एनर्जी के बाद फिर है मेंटल एनर्जी। जनरली हम क्या करते हैं, मेरा फिजिकली मैं फिट हूँ, वेल बीइंग है, बस, फिर वी डोंट केयर अबाउट द अदर 3 लेवल्स। व्हाट आर द अदर 3 लेवल्स? अब मेंटल लेवल means the ability to stay free from distractions, the ability to be focused, the ability to eliminate waste. ये है मेंटल एनर्जी। मेरी मेंटल एनर्जी इतनी है, मेरा रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी इतना है कि मैं ये काम फोकस से कर सकती हूँ, मुझे कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो वो है मेंटल एनर्जी, फोकस्ड। तो ये है फिजिकल एनर्जी, आपकी क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, आप कितना घंटा काम कर सकते हैं। जैसे हमने देखा वो जो हार्बर में बैठा था तो काम शुरू ही नहीं किया और थक गया, तो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी लेस है। कई लोग हैं 18 आवर्स अ डे काम कर सकते हैं, 14 आवर्स अ डे काम कर सकते हैं, फिर भी फ्रेश रहते हैं। सो फिजिकल एनर्जी ज़्यादा है। अच्छा, दैट इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी। उसके बाद मेंटल एनर्जी इज क्लैरिटी ऑफ एनर्जी। I know where I have to use my energy. And emotional energy is the quality of energy. Emotional energy क्या है कि हम सारे दिन में बहुत सारे इमोशंस के अपहीवल में आ जाते हैं, है ना? समझो somebody blamed me, somebody commented, some failure, some situation, तो हमारा इधर क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर मैंने इसको सॉर्ट आउट नहीं किया तो रिएक्ट करूँगी, कहीं ना कहीं रिएक्शन आएगा। सो इफ़ आई हैव गुड क्वालिटी ऑफ इमोशनल एनर्जी, देन मैं डिस्टर्ब नहीं हो जाऊँगी। कुछ भी होगा, आई विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, इन फैक्ट आई विल रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन विद मोर वैल्यूज़। मुझे रिएक्शन में नहीं आऊँगी, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड करूँगी क्योंकि मेरी इमोशनल एनर्जी हाई है। एंड स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है? तो स्पिरिचुअल एनर्जी माना कोई रिलीजन नहीं है। स्पिरिचुअल मीन्स हाउ मच अलाइंड यू आर विद योर पर्पस। आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपको वो सेंस ऑफ पर्पस है, इसीलिए दिस डजंट मैटर आपको पगार कम मिल रहा है कि ज़्यादा मिल रहा है, डजंट मैटर, बिकॉज आपको पता है आप क्यों काम कर रहे हो। सो यू हैव अ सेंस ऑफ पर्पस. So you go beyond, certain feelings. Spiritually, you're aligned with, you're connected with your value system. So you don't need people to tell you, you don't need people to coax you, but you work from your heart. वो है spiritual energy. तो ये पिरामिड में अभी हमें चेक करना है। अगर अभी हमें अपनी एनर्जी लेवल को मैनेज करना है, so now here is the key. How should I manage my energy level? So we must, अगर मुझे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, so I have to balance my energy expenditure with energy renewal. अभी जैसे आपने बहुत काम किया, आज सारा दिन आपने 18 आवर्स काम किया, फिर आप रेस्ट करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? रेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि रेस्ट के बाद आपका एनर्जी रिन्यूअल होगा। समझो आपका मसल टेयर भी हो गया, लेकिन एक रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाता है। और कभी कभी हमें कंफर्ट जोन से थोड़ा ज़्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि उस टेयर से मसल और स्ट्रांग हो जाता है। आप देखो जैसे एक्सरसाइज स्टार्ट में करते हैं तो पेनफुल होता है, हमें लगता है कि सब दर्द हो रहा है, पर नहीं, आपका मसल की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है।
उसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है। तो इसीलिए रिकवरी इम्पॉर्टेंट एंड स्टेपिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये हो गया फिजिकल। अब मेंटल, जो मेंटल एनर्जी को हमें उसको बढ़ाना है। सो व्हाट इज द की टू इम्प्रूव और माय मेंटल स्टेमिना? फॉर दैट रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन। तो मुझे थोड़ा रिफ्लेक्ट करना है कि मेरे, क्योंकि हम लोग सारा दिन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, आई जस्ट गेन नॉलेज, देन इट विल लीड टू क्लटर। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। जैसे गधे को मालूम नहीं, उसके ऊपर ज्ञान का किताब बहुत सारा रखो, उसको नहीं मालूम पड़ रहा है कि मैं ज्ञानी हो गया हूँ, उसको लगेगा बोझ हो गया। सो दैट शुडंट लीड टू बर्डन, इट शुड लीड टू विजडम। वो कब होगा? जब थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, फोकस करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे। इन्फॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करना है, इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना है। सो दैट हैपन्स थ्रू रिफ्लेक्शन, दैट हैपन्स थ्रू मेडिटेशन। So mentally you are energized. You know what, when, where, how. So all things are clear. So there is clarity. When clarity is lost, when there is burden and clutter. Okay? So this is how to improve my mental stamina. इसके बाद है हमारा emotional energy. तो इसके लिए हम एक एक्सरसाइज करेंगे। सो एनीबडी वुड लाइक टू कम अप हियर एंड टेक दिस चेयर। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, यू लर्न क्विकली। कोई आ जाए, हाँ, गुड, कम। वन मोर चेयर कैन आई गेट? एक और चेयर मिलेगा? सो 2 people इनफ, आई थिंक, राइट? हाँ, तो 1 chair, प्लीज टेक द चेयर। Your good name? Santosh. Brother Santosh, and you? Preeti. Sister Preeti. So you both take the chair and now you have to sit firmly on this chair. आपको इस चेयर पे बहुत अच्छी तरह, थोड़ा सा आगे ले लीजिए, थोड़ा। ओके, गुड। इस वायर से थोड़ा सा आगे, इनफ। सो नाउ आपको क्या करना है? इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ऑफ द वायर, यू कैन टेक इट मोर फ्रंट। ओके, गुड। सो नाउ आपको इमेजिन करना है कि ये चेयर आपका सब कुछ है। दिस चेयर संतोष एंड प्रीति। सो यू हैव टू इमेजिन दैट दिस चेयर इज़ योर पोस्ट, इट्स योर पोजीशन, इट्स योर अचीवमेंट्स, अकम्पलिशमेंट, ज़िंदगी भर में जो जो किया है वो सब इसमें है। अब इसको आपको टाइट पकड़ना है, क्योंकि हम थोड़ी उसको खोएंगे ना। पोस्ट कोई खोना चाहेंगे? आपको एक सीनियर पोस्ट मिला है, अभी आप जूनियर में आएंगे नहीं, आप तो उसी में रहेंगे ना, और अच्छे पोस्ट में जाएंगे। तो पोस्ट, पोजीशन, एवरीथिंग इट्स माइन, सो आई हैव टू होल्ड इट टाइटली। सो होल्ड इट टाइटली ब्रदर, दिस इज योर एवरीथिंग। सो आपको बहुत अच्छी तरह पकड़ना है, जाने नहीं देना, बिल्कुल नहीं जाने देना है इसको। ओके? अभी आपको कोई बोलता है आपको शिफ्ट लाना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना है, आप जैसे हैं वैसा नहीं चलेगा, आपको थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो थोड़ा ये कुर्सी है ना, बिना उठे इसको टाइट पकड़ के, इसको लेफ्ट में 10 एटलीस्ट 1 फीट आप शिफ्ट कर सकते हैं। टाइट पकड़ो इसको, आप लेफ्ट में दोनों भी टाइट पकड़ते हुए इसको शिफ्ट करना है। चलो इसको शिफ्ट आपको बदलना है अभी, है ना? आप इधर आए हैं ब्रह्मा कुमारी में, चेंज तो होंगे ना, बदलेंगे ना, और थोड़ी पोस्ट गंवा देंगे आप। पोस्ट सब पकड़ के ही चेंज होएंगे ना, ऐसा ही है ना? पोस्ट को पकड़ेंगे ना। इट्स नॉट मूविंग, ट्राई ट्राई। यू डोंट हैव टू गेट अप, यू आर ट्राइंग। ओके, okay, then I will tell you one more way. You get up from the chair. Please get up. Get up and go a little aside. इसको साइड में जाइए।
अब इसको आप लेफ्ट में थोड़ा सा 1 फीट आप इसको शिफ्ट करिए। हाँ, इजी, ये इजी था, वो इजी था, ये इजी था। गुड, वेरी नाइस, यू कैन टेक योर सीट। गुड, गिव देम अ बिग हैंड। तो आप लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया? कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, राइट। और क्या समझ में आया? डिटैचमेंट। देखिए, हम इमोशनल कब होते हैं? जब हमें लगता है ये मेरा सब कुछ है और ये मेरे से छीन लिया जा रहा है, अब मुझे इसको शिफ्ट करना है तो बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर सकती। लेकिन मैं डिटैच होती हूँ और एक थर्ड पर्सन बनती हूँ और मैं दूर से इस जगह को देखती हूँ और फिर शिफ्ट करना इजी है कि नहीं? फिर शिफ्ट लाया, फिर मैंने चेंज लाया और इजी है चेंज। तो डिटैचमेंट ऐसा है। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि ड्यूटी छोड़ो, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि रिलेशन छोड़ो। डिटैचमेंट मीन्स सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। आप एक थर्ड पर्सन बन के आप अपना ही रोल देखो, अपना ही बिहेवियर देखो, समझो कि कहाँ करेक्शन करने की ज़रूरत है। अपने आप को देख के सॉर्ट इट आउट, सॉर्ट योर इमोशंस। अगर आपने ये टाइम दिया ना अपने आप अपने इमोशंस को सॉर्ट करने का, तो आप देखना कि आपका रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज यू ऑलरेडी क्लियर थिंग्स इनसाइड। सो यू विल बी मोर इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। तो देखिए, ये है फॉर इमोशनल एनर्जी आई नीड टू प्रैक्टिस दिस डिटैचमेंट पॉजेस। आई नीड टू प्रैक्टिस पॉज, द स्पेस ऑफ पॉज। समझो एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, पूरे पेज का एक ही सेंटेंस है, उसमें कोमा 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 है। तो आपको समझ में आएगा पढ़ने को? आपको सेंटेंस क्या कहने की कोशिश कर रहा है समझ में आएगा? एंड सपोज अ पेज इज फिल्ड विद अल्फाबेट्स एंड नो स्पेसेस एट ऑल, स्पेस ही नहीं है, तो समझ में आएगा? तो समझ में आने के लिए कैसा चाहिए? शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट वर्ड्स, इंटरस्पर्स्ड विद स्पेसेस, थोड़े बीच में स्पेसेस हैं, फुल स्टॉप्स हैं। तो हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? स्पेसेस ऑफ पॉज, स्पेसेस ऑफ स्टॉप, जहाँ आप रिफ्लेक्शन कर सको, मेडिटेशन कर सको, डिटैच हो सको, थर्ड व्यक्ति बन के ऑब्जर्व कर सको। तो इससे आपकी एनर्जी मेंटल इमोशनल बढ़ जाएगी। ओके, एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, व्हाट इज़ दैट? तो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए यू नीड डिटैचमेंट फ्रॉम आइडियाज़। हमें लगता है यही बचपन से सुना है तो यही ठीक है, यही बिलीफ मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी ने यही बताया था। बट अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो डिटैच फ्रॉम योर बिलीफ सिस्टम्स, फ्रॉम योर आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, एंड सी एवरीबडी एज सोल्स। तो फिर उनकी नेगेटिविटी, उनका जो भी बिहेवियर वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दे आर प्योर सोल्स एंड एवरी सोल प्योर फॉर्म, peaceful, loveful, happy, blissful, powerful. So then you will not be influenced by their behavior. तो आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर मुझे एनर्जी को बढ़ानी है, मेंटेन करना है फॉर प्रोडक्टिविटी, तो मुझे शिफ्ट लानी पड़ेगी अपने थिंकिंग में। तो मुझे क्या करना है अभी? इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग टाइम, आई नीड टू मैनेज माई एनर्जी। तो जैसे अभी बताया कि वी थिंक मोर अबाउट अ फिजिकल वेलबींग, बट आपको पता होगा क्रिकेटर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, दे हैव साइकोलॉजिस्ट, दे हैव काउंसलर्स। व्हाई? बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइम फॉर देयर मेंटल एनर्जी, फॉर देयर इमोशनल एनर्जी। तो वो लोग दे मेक टाइम फॉर इट। और एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने उनको स्टडी किया, जो बहुत ही हाई परफॉर्मर्स है स्पोर्ट्स में, चाहे वो टेनिस प्लेयर्स हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हैं। सो ही ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड देयर बिहेवियर, ही स्पेंट आवर्स इन स्टडिंग द टेप्स ऑफ दीज प्लेयर्स एंड ही जस्ट कुडंट फाइंड आउट व्हाट वाज द डिफरेंस।
And then suddenly he found out, and the difference was in between the performances, they gave time for recovery. And that was the key for high performance. तो हम सब परफॉर्म करते जाएं, एनर्जी स्पेंड करें, एक्सपेंड करें, और रिकवरी नहीं हो तो बैलेंस इज लॉस्ट, देन यू आर ड्रेन्ड. तो इसीलिए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी हम पॉजेस रखें, रिफ्लेक्शन, मेडिटेशन, इससे हमारी एनर्जी रिकवरी हो जाती है. सो नाउ फॉर हाई प्रोडक्टिविटी आई डोंट हैव टू अवॉइड स्ट्रेस. तो शिफ्ट इन योर थिंकिंग. सीक स्ट्रेस मीन्स रादर आपको उसको अपने अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ देखना है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखना है. तो लाइफ इज़ अ मैराथन नहीं, बट लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ स्प्रिंट्स. जैसे मैंने कहा कॉमा 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 करेंगे ना, कल ये हुआ, परसों ये हुआ, फिर आप थक जाएंगे. कल मैंने 1 घंटा पहले पूरा टाइम वेस्ट किया, तो फिर हमें लगता है कि हम कोई काम के नहीं. फुल स्टॉप लगाओ. आज अभी मैं अच्छा करूँ, नाउ न्यू सीरीज, न्यू स्प्रिंट. तो फुल स्टॉप लगाते जाओ, फुल स्टॉप लगाते जाओ. जो आपको लगता है खराब हो गया, कोई बात नहीं, फुल स्टॉप, स्टार्ट फ्रेश. तो इस तरीके से हम अपनी एनर्जी को बचत करेंगे, एनर्जी रिकवरी करेंगे. सो पहले हमारी सोच थी, थॉट प्रोसेस था, डाउन टाइम इज़ वेस्टेड टाइम, एंड नाउ डाउन टाइम इज़ प्रोडक्टिव टाइम. जो आप यहाँ पर आए हैं, सो डोंट यू थिंक इट्स प्रोडक्टिव टाइम और इट्स वेस्टेड टाइम? भले आप अपना काम सब छोड़ के आए, बट अपनी एनर्जी बढ़ रही है ना, इट्स रिकवरी, राइट. सो वहाँ पर पहले हमारा शिफ्ट, हमारी थिंकिंग थी रिवॉर्ड्स फ्यूल परफॉर्मेंस, बट अब पर्पस फ्यूल्स परफॉर्मेंस. सेल्फ डिसिप्लिन रूल्स, रिचुअल्स रूल. द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग समझते थे, और अब समझ में आता है इज द पावर ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट. सो नाउ हम लोग सोचते हैं कि कोई शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है. अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है. शिव पिता को अब याद करो.
the last note I would like to say that being a leader, if you are charged, then you are like a magnet. आपको पता हो मैग्नेटिज्म लॉ के हिसाब से when a big magnet and a small magnet are placed with each other, small magnet becomes as powerful as the big magnet. So as a leader, if you are magnetized, you are charged, तो आपके team members भी वो उनको भी दिशा मिलेगी, they will all be aligned and you will all be aligned towards a goal. और हमें लगता है कि एक गुड समरिटन कभी आएंगे और हमारा जीवन चेंज करेंगे, है ना? हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा? रिमेंबर, यू आर द लीडर यू हैव बीन वेटिंग फॉर. आप ही वो लीडर हो, यू हैव द पावर. सो बिकम दैट लीडर. ओम शांति. थैंक यू वेरी मच. Om Shanti. Thank you, Neerja Didi, for a beautiful session with so many good and practical examples and exercises and a beautiful insight and wisdom. Thank you very much. Now, we have another very powerful session. Shivani Didi was also talking about Dr. Mohit Gupta. He's here. एंड आप में से कोई बाहर जा रहे हैं तो जल्दी वापस आ जाएं, और कोई बाहर हैं मिलते हैं या आपके साथी हैं उनको बुला लीजिए. बहुत सुंदर सेशन है. एंड बिफोर दिस सेशन वी स्टार्ट, आई हैव फ्यू अनाउंसमेंट्स. Number one is many of you are asking for the to be involved into IT wings services and activities. So whoever wants to be involved, so you can come in the same hall at 2:30 p.m. today after lunch. I think I'm clear. And all these sessions, what we had in this conference, are available online in YouTube. And many of you are asking for the seva. It's the voluntary contribution to the organization where you have come. So just for your clarity, there's outside this door, there's one box is kept, and also the QR code also there. So you can contribute online. Even I think it will be arranged this side, brother sides also. So you can take the benefit of serving the society. And for sightseeing, tomorrow is the sightseeing day. So please book your vehicle in sightseeing office, in the accommodation and transport office, that side. The office timings are 8:30 to 2 p.m. and 4:30 to 6 p.m. it will be open, sightseeing office. And many of you really have so many things in your heart and you want to share, yes? So we have a video recording going on, your feedback, your experiences. So you can share some of the, give little bites, no? Few bites which can benefit others too. और हम यूज़ कर सकेंगे उन बाइट्स को. और अगर आपको लगता है आपको रिकॉर्डिंग नहीं करना है, so you can send email to IT Wing with your positive feelings. आपको कैसा लगा, क्या चाहिए, कैसा अनुभव हुआ, so हमें जान के खुशी होगी. And one more thing I want to share with you, because when we attend such types of programs and we go back to our offices, we want to make them also be benefited by this knowledge. So you can arrange such types of sessions by Brahma Kumaris. We have short programs like 2 hours, 1.5 hour session on stress-free life and positive thinking, harmonious relations, digital wellness, many different subjects which are relevant in our professional life, and even the families of your IT professionals. So you can write an email to IT Wing and CC to your local center also. So your local center can also arrange faculties, and your IT Wing also can help into arranging the faculties. So please, it is nice to give the benefit to your office and your other places, like some of you are connected with some society, with the trust, or any of the educational places. Brahma Kumaris offers these programs free of cost to all the organizations and institutions. And the agenda sometimes gets changed. Like today, our break is changed and we have extra session is very special. So updated agenda, you can check with the QR code, or it's available outside. This
gate number 2, sister's side. And when you had come, you had got the 2 slips, accommodation slip in the accommodation office, and what was the other slip you got? Toli. What is toli? It's a toll tax kind of thing. What is toli? Toli is the prasad. In Brahma Kumaris, this is our language, we use this word toli. Toli is like our founding father used to use this word. बच्चों को ना कुछ टोली देते हैं थोड़ा सा. So when you go back to your home, हमने तो यहाँ प्रसाद खाया, आपके घर में बहुत से लोग बैठे हैं, उनको भी थोड़ा प्रसाद देना है, तो आप यहाँ से वो टोली का स्लिप दिखा करके, हमारा जो टोली डिपार्टमेंट है जहाँ डाइनिंग है ग्राउंड फ्लोर में, उसके राइट साइड में टोली डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जाकर के आप वो स्लिप दिखा के अपनी टोली ले सकते हैं, माना प्रसाद ले सकते हैं. उसको रास्ते में कंज्यूम नहीं करना, घर ले जाके अपने फैमिली के साथ शेयर करना. दैट ओपनिंग आवर्स फॉर द टोली डिपार्टमेंट इज मॉर्निंग 9 to 12 and evening 5:30 to 6:30. Thank you. Now I would like to invite Dr. Mohit Gupta. Dr. Mohit Gupta ji for another session. And the session is Change Your Life Forever. Yes, we can welcome brother. Dr. Mohit Gupta is a renowned TEDx speaker and is an intervention cardiologist. He is also the cardiologist in Parliament Health Annex for honorable members of the Parliament. Dr. Gupta has a unique distinction of getting more than 18 gold medals and 5 silver medals. I think this must be a record. For his distinguished research in the field of cardiology, Dr. Gupta has received a number of national and state-level awards, including the prestigious National Best Innovation Award in Cardiology for the year 2021 and Eminent Teacher Award by Delhi Medical Association in 2022, Excellence in Cardiology Award in 2018, and the list is very long. He was the brain behind the famous preventive cardiology app